Welcome to our special show on the IPL2023 predictions. And predictions are always tough to get right. We've got it right more often than not. But yesterday was a bad day in office for DC. They lost at home and we had predicted that DC would win. अभी अलग बात है कि आखिरी गेंद पे मुंबई इंडियंस जीती, पर मुझे लगा खास तौर से जिस हिसाब से डीसी खेल रही थी कि 18वें ओवर में अगर आप 4 विकेट एक के बाद एक आपने खो दिया और वो एमलेस बैटिंग जिसे कहते हैं, हर बल्लेबाज आ रहा उठा के मारने की कोशिश कर रहा, आउट हो रहा है या बोल्ड हो रहा है, इट वाज क्वाइट पुअर एंड द पेन वाज देयर ऑन चीफ कोच रिकी पॉन्टिंग्स फेस. अनदर great from India, Saurav Ganguly there was also present as mentor. But anyway, let's try and put that behind us. DC should worry now because they are losing match after match and they need to get something right. So let's talk about today's match, which is ChennaiSuperkings, led by the great MS Dhoni, and then they are taking out RajasthanRoyals at home. 9 times out of 10, people will say that CSK playing at home in Chennai against any team, they will beat them 9 out of 10 times, but I will go with RajasthanRoyals. Yes, I know I'm taking a big risk, but one of the reasons is that I find that Rajasthan Royals has a nice balance of attack and where their batters are concerned. Second is they are winning matches, so the mood is always different. There are players who step up, and for that reason, I would go with RR. Also, the second reason is that Moeen Ali may not play again for Chennai Super Kings because he's unfit. Ben Stokes is not playing. Deepak Chahar is also not playing. So that list should worry Dhoni quite a bit. Of course, they have some replacements coming in, but like I always maintain that when you have new players coming in, they take a little while to adjust, and time may not allow that in this IPL. So let's begin with what we have on hand. Now, speaking about the campaign so far, both teams have endured a loss and won twice with 3 matches played. While Sanju Samson and company are coming from a massive win against the Delhi Capitals, Dhoni, his team have beat their arch rivals Mumbai Indians comprehensively by 7 wickets. तो जब आप देखेंगे कि हौसला की जहां तक बात होती है, कॉन्फिडेंस की बात होती है, मोमेंटम की, तो दोनों ही टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, पर उसमें थोड़ा बहुत एज संजू सैमसन की टीम का ज्यादा है. राजस्थान रॉयल्स हैव won 4 out of the last 5 meetings against CSK, and the latter would obviously want to stop that trend. तो पिछली 5 बार जब इन दोनों की मुलाकात हुई है, राजस्थान रॉयल्स और CSK, 5 में से 4 बार RR जीता है. पिच रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. पिच रिपोर्ट की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ. जो विकेट है एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, वो स्पोर्टिंग विकेट कहलाता है, बट इट फेवर्स द बॉलर्स, स्पेशली द स्पिनर्स की खास तौर से मदद करेगी. तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से साइड में बेहतर स्पिनर्स मौजूद हैं. और जहां तक स्कोर की बात है, जो भी साइड 160 में और 160 से 180 बना ले, वो एक अच्छा कंपेटिटिव टोटल रहेगा. जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो शायद पहले फील्डिंग करे. जहां तक इंजरी और अवेलेबिलिटी की बात है, दीपक चहर और बेन स्टोक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो शायद मोस्ट प्रोबेबली इस गेम में नहीं खेलेंगे. बेन स्टोक्स को भी इंजरी है, दीपक चहर एक पहले से ही इंजरी लेके चल रहे थे और अभी पूरे फिट नहीं है. मोइन अली ने पिछला मैच नहीं खेला था, हालांकि अवेलेबल फॉर सिलेक्शन है, लेकिन अब जो फ्रेश रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं कि शायद मोइन अली भी फिट ना हो. धोनी के लिए अच्छी खबर जो है वो ये है कि 2 लोग श्रीलंका से आ रहे हैं, 2 प्लेयर्स, महीश तीक्षणा और पथिराना, ये स्क्वाड में आ रहे हैं और इससे सीएसके को बूस्ट जरूर मिलेगा. Now players to watch out for CSK, obviously Rituraj Gaikwad, he is in great form at the top. He is in line to get the Orange Cup this season. The right-hander, he understands the dynamics and performances as per the requirements of the game. More specifically, and numbers don't lie, in 3 outings, he has aggregated 189 runs. 3 मैचेस में उन्होंने 189 runs बनाए हैं और 2 अर्धशतक भी लगाए हैं. वो एक फाइन फॉर्म में है. रविंद्र जडेजा उर्फ जड्डू 2 बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और एक अच्छा उन्होंने
momentum pick किया हुआ है. Now let's take a quick look at what he has done so far. He has returned with a 3-wicket haul in his 4 overs for a mere 20 runs. In the last match, he will look to maintain this momentum in this turning track in Chennai. Moeen Ali has picked up 4 wickets for 26 runs in 4 overs. This was the first time Moeen picked a 4-wicket haul in IPL, but he missed the last game. Is likely to be back if he is fit, but there is still a question mark on his availability. When it comes to RR, at the top you have Jos Buttler, who was the highest run scorer in the last IPL, and this season too. In 3 outings so far, he has been the leading run scorer for RR with 152 runs in 3 games at an average of 50, an excellent strike rate of 180.95. Yashasvi Jaiswal has come of age. The left-hander batter is in par with Jos Butlers, and the duo, they have added more than 80 runs in the first wicket in 2 out of 3 games. So if once the opening batters begin clicking, it's a huge relief for the team and for those following after that. Jaiswal has scored 125 runs in 3 games at an average of 41 and a strike rate of 164. Chahal, the leggy, he is the leading wicket taker for RR this season. चहल ने 8 विकेट लिए हैं 3 गेम्स में. एक एवरेज जो उनका है 11.75, इकोनॉमी रेट 7.83 और स्ट्राइक रेट 9 का है. हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो CSK वर्सेस RR टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन्होंने 27 खेले हैं. CSK ने 27 में से 15 बार जीता है और RR ने 12. सो केवल 3 मैचेस का फर्क है. प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगा CSK के लिए? सो मेरे पास जो लिस्ट है हम लोगों ने जो बनाया हमारी टीम ने, तो डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड ये ओपनिंग करेंगे. अजिंक्य रहाणे उसके बाद आएंगे. मोइन अली अगर फिट रहे तो वो आएंगे. अंबाटी रायडू मिडिल ऑर्डर में. रविंद्र जाडेजा, MS धोनी कप्तान. मिचेल सैंटनर स्पिन ऑलराउंडर. महेश तीक्षणा ये श्रीलंका के नए प्लेयर हैं, ये स्पिनर के रूप में आएंगे. हंगर गेकर फास्ट बॉलर. तुषार देशपांडे फास्ट बॉलर. अब जहां तक तुषार देशपांडे की बात है, उन्हें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और एक मैच में तो उन्होंने करीब 11 गेंद फेंके थे, कई वाइड्स थे और नो बॉल्स थे और बहुत ही इरिटेट हुए थे MS धोनी. बल्कि उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था दैट इफ एनीवन वांट्स टू बोल वाइड्स देन दे नीड टू लुक फॉर अ न्यू कैप्टन. सो दैट इज एज कैंडिड एज धोनी कैन गेट. शिवम दुबे is among the impact players. He's a good hitter and a good batting all-rounder. Then Akash Singh, Sheikh Rashid, Senapati and Nishant Sindhu. Talking about RR, Jos Buttler and Yashasvi in the opening ranks. Sanju Samson, wicketkeeper batsman. Riyan Parag, batting all-rounder. Shimron Hetmaya coming a little way down the order and an explosive batter. Can swing the game anytime. Dhruv Jorel has done well as a second wicketkeeper batter. Ravichandran Ashwin and Chahal, obviously they need no introduction. They play regularly for India in different formats and both are excellent bowlers. Jason Holder, he is a bowling all-rounder. He can use the long handle very well. Trent Bolt will open the bowling attack. Sandeep Sharma might come in the middle overs if he is used as a very handy, experienced bowler. Among the impact players, Navdeep Saini, he needs to come back into the main group. Was last season tipped as an excellent fast bowler. He was mentored by Gautam Gambhir, if you remember. But of late, there's not been much news around him. Akash Vashisht, left arm orthodox. Murugan Ashwin, leg spinner. KM Asif, fast bowler. And Donovan Ferreira, wicket-keeper batsman. So to sum this up, in Chennai, at the ChennaiSwamy Stadium, playing against the men in yellow in front of a packed stadium who just love and adore Dhoni, chants of Dhoni, Dhoni like it used to happen for Sachin, Sachin, is going to be a tough act playing them in their home ground, but for all the right reasons. When you're talking about the batting lineup, when you're talking about their bowling lineup, their attack, their fielding ability, and since it is being repeatedly said that this pitch will assist spinners, so that their spinners, which means Rajasthan Royals, the spinners that they have are of a much superior capability. They have proven ability and they also have the right batsman at the top and in the middle to accelerate. So let's see how it goes. I
would go with Rajasthan Royals beating Chennai Super Kings in Chennai tonight. And let's hope for the best. Thanks for watching. We'll be back with lots more.